पाएगा ना. Okay, so this week is Anushka's turn. Now I'm obviously going to help her, and there's a cat in the background. So first I am going to help her. So first we'll start with the dessert. This is choco biscuit balls. So first things first, you have to crush the biscuits by your hands, and if you think that it's getting difficult, then we can just simply grind it. So it's going to be your call. Next step is to add cocoa powder. थोड़ा सा बस या ऐसा जाएगा क्या? डाल के देख. थोड़ा सा डाल पहले. रुक जा. नहीं और चले लगेगा. मिक्स करके देख, अगर और चलेगा तो और डालना. अभी के लिए उतना ही. अब मिक्स कर. एक ही हाथ से. एक साथ लाने की कोशिश कर. अभी स्मॉल बॉल्स बनाने की कोशिश कर. अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा और कंडेंस करना. पहले कोशिश कर बनाने की. इसमें हाँ. इसको से लड्डू जैसा दोनों हाथ से ऐसे गोला जैसे करते. थोड़ा चाहिए लगता. हाँ डाल दे. फिर थोड़ा डालना. तो छोटे छोटे स्मॉल बॉल्स बना के ऐसे से रख दे साइड में. बाइंड हो रहा है. एंड दिस हैज स्पिल्ड. एनीवेज, so now for the main, Anu is getting ready with her masala. तो मसाले में क्या क्या है? प्याज, टमाटर, अदरक नहीं है. ओ सॉरी. वो बाद में. लहसुन और ग्रीन चिली. अदरक लहसुन नहीं है इसमें. ओनली ग्रीन चिली, प्याज और टमाटर. मुझे लगा वो भी डाल दिया. अच्छा, एक मिनट. यू मूव इट दी अपोजिट. हाँ, अपोजिट साइड में से निकालने का. हाँ गुड जॉब. अभी लहसुन और अदरक, इसका ढक्कन. हाँ ये ना. सही है ना भाई?
इतना जल्दी नहीं. अच्छा Which is the chicken curry. So first things first, बड़े से पतीले में ऑयल जाएगा. पहले गैस ऑन. पता चला गैस ही ऑन नहीं. डालू हाइट नहीं पाती. एक ने और थोड़ा सा और सॉस ओके. नीचे से अरे नीचे से आती जाती है. फिर ऊपर उछलेगा नहीं तो गाल क्यों फनी. आराम से अभी जिंजर एंड गार्लिक गाल स्लो क्यों स्लो हो गई. बस हाँ अभी मिक्स करते हैं. Good. King now. Star ingredient. More. अरे रे. It's okay. अदरक और लहसुन पेस्ट with some water so that the spices don't burn. अच्छे से पूरा डाल दो. या अच्छा डालते हैं अभी. मेन में स्पाइसेस ये तो और बस ना. गाल थोड़ी सी गाल. हाँ बस ज़्यादा तीखा हो जाएगा. थोड़ा और ना. सुहाना का चिकन मसाला विच सुहाना का सबसे बेस्ट मसाले आते हैं. हमारा फेवरेट. या नॉट स्पॉन्सर्ड. पकड़ ले. नहीं डाल दे एक साथ. तो एक करके डाल दे. अच्छा नहीं जाता है. गर्म. हाँ मिक्स. हार्ड वर्क. मिक्स. एक तरफ से पकड़ ले.
यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, वो गर्म लग रहा है तो पकड़ लेना. गरम है. फनी ऑलवेज. अरे किसका पकड़, बर्तन को पकड़ेगी तो ग्रिप आएगा ना. ऑसम. मस्त बना. वाओ, मजा आ गया. गरम में बट बहुत टेस्टी लग रहा है खाने को. Water was also served, so thoughtful. Yeah. So tempting. Not able to control. Nice. ओके, बट थोड़ा मिल्क में ज़्यादा होना चाहिए था इसमें. बट अच्छा. तो अच्छा लगा. तो अभी हम लोग डिक्शनरी खेलने वाले हैं. तो इनको पीछे करोगे तो आपके वर्ड्स है जो आपको Okay. यहाँ पे बनाने हैं. Okay. और जो भी गेसिंग में रहेगा उसको 1 मिनट में गेस करना है कि क्या है वो वर्ड. ओके ओके oh my god. ओके श्योर. देख ये समुद्र और समुद्र है और उसमें ये ब्रिज है. पेड़ पेड़ है और टब. ये बच्चे लोग वहाँ पे आ रहे हैं पानी लेने के लिए. कुआं है. बच्चा लोग ने बच्चे कुछ लोग ने किया. हम लोग क्या करते झंडा थे गाड़ा. बीच पे जाके क्या बीच में बनाते? जाके झंडा गाड़ा. वो ये बना के फोटो बना के अपना ये. नहीं अरे वो उसका क्या बोलते हैं बीच पे क्या होता है? एनरेट करके कुछ वो बोलते हैं ना. अरे वो ना, बोलते हैं बीच ना. पे क्या होता है? बीच पे जाके वो बीच पे क्या? बीच पे मैं क्या करती थी बीच पे? बीच पे जाके वो बनाती थी. हाँ, उसको मिट्टी क्या का बोलते हैं? मिट्टी को बोलते क्या. हाँ समझ उसको समझ. दिखा दिया वर्ड. हाँ मुझे दिख रहा नहीं. पेड़, मशरूम, बंदा है. इंसान है. इंसान क्या है? मुझे आइडिया है क्या है. क्या ठीक से बना नहीं लगता है. क्या? उस बंदे का क्या है ये बोल. हैट, ये आर्म्स, ये शर्ट, अरे ये बॉडी, अपर बॉडी. अरे उसके टीन के नीचे क्या रहता है आदमी के. बियर्ड. डिसाइडर. मग. टी पॉट. टी मग. या हो गया. यस फाइनली है का. अभी तेरे
Last. Wow. Okay. इसको कैसे बनाऊंगी मैं? Ready? इसको कैसे बनाऊंगी मैं? Quickly, 1 minute है. Cloud, thundering. नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लड़की. कैसे बनाना है. Frog. लेकिन नहीं, मेरे को खुद को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बनाऊं कैसे 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 करें. लड़की. लड़की लेकिन बुढ़ी. is a जैसे परी जैसी कुछ होती है. डिस्क्वालीफाई बता दिया क्या है. ये I won. तो फेरी थी. मैं एंजल. Time for marks. For the starter, we had jeera chicken. So how much would you rate her? That was awesome. So I would rate her 9. 9. Okay. For the main, Main, I would give again 9 because okay. first time she has done it and very nicely she has done it. Yeah. The dessert. Dessert also I'll give 10 because dessert is difficult to make, but first time she made it very nicely. Okay. And entertainment. My God, it was awesome. I did not thought कि she was so creative. Really, I realized today कि आज मेरी बेटी को मैं 10 दूंगी. Okay. It was awesome, really awesome. So for the starter, the jeera chicken. Oh my God, so delicious. बहुत ही अच्छा लगा मुझे तो a 10. Yeah, it was so good. The main course, I loved that she was thoughtful enough to bring water. The presentation was so good. So taste wise, it was definitely an 8. But overall, I would love to give her a 10 again. Wow. Yeah. Dessert, again, my favorite. It's one of the few desserts that I really enjoy and love. So it was perfect, and for the first try, it was very good. So 10. Entertainment. My goodness, the way she used all of these things, and it was so much fun. Also because I won, I will give her a 10. So out of from me, best performance ever. Very nice, awesome, good job. Overall, your thoughts on the whole thing, and also how do you feel about winning the Yeah. cook-off? Yeah, I'm really enjoyed. I really enjoyed. I thought it wasn't stressful enough as I thought. हाँ. Like starting में, I thought कि it was going to be very chaotic, but you remained so calm throughout. So, I even surprised myself. oh, so cute. Okay. I love her. Okay. She does not enjoy the cliche things. I love this challenge. Yeah. Yeah. Okay. Hey guys, I really hope that you enjoyed this challenge. It was so much fun to film and edit and record all of this stuff. I am so proud of this content, and I really hope that you guys had as much fun watching it as much we had filming it. Surely we're going to do more such challenges in the future, and stay tuned for that. Also, if you like it, then please do give it a thumbs up because it really means to me, and subscribe. Yes, that's it. Bye guys, thank you so much for watching. Love you.